फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स की जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। देखते हैं उसके बारे में डीप में। Natural language processing is subfield of AI and linguistics that focus on interaction between computers and human language. The goal is to enable computers to process, understand, and generate human language in a way that is meaningful and useful. NLP has a wide range of applications such as chatbot, voice assistant to machine translation, semantic analysis and much more. जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो हमारे एनएलपी है, ये वर्क करती है हमारे कंप्यूटर प्लस जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसके साथ ये वर्क करती है। अब जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको प्रोसेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जैसे कि हम सम सेंटेंस के मीनिंग जैसे रहते हैं कि अलग अलग रहती है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग रहती है बट उसका मीनिंग एक ही रहता है। जैसे कि जो हमारे एनएलपी बहुत सारे एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर व्हाट्सएप पे किसी को आपका हाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उसको मैसेज भी कर सकते हैं और उसके साथ आप उसको वॉइस भी उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं बहुत सारे चैट बॉट्स जैसे कि गूगल असिस्टेंट, मेटा या यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइस असिस्टेंट के थ्रू हमारे सिस्टम को कमांड पास करने का काम करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं एनएलपी में, जैसे कि उसमें आते हैं कोर कंपोनेंट टास्क में आते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्रोसेसिंग इंक्लूड टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, एनिमेशन, स्टॉप वर्ड्स एंड रिमूवल वर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट आता है उसका पीओएस, पार्ट ऑफ पिच टैगिंग, जिसमें क्या नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट होता है उसका एनईआर, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, डिटेक्टिंग एंटिटीज लाइक नेम, डेट, लोकेशन एक्सेट्रा। सेमेंटिक एनालिसिस, डिटरमिनिंग द सेंटिमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। सेमेंटिक एनालिसिस में हम सेंटेंस का वे कौन सा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, फिर उसको न्यूट्रल ट्यूनिंग उसके थ्रू उसको क्या करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसफर text from one machine to the one language to the another. Next is text summarization, generating cosines summaries of longer documents. Speech to text or text to speech, converting spoken language to the text और वाइस वर्सा। ये भी हम यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कॉमन टेक्निक्स में यूज करते हैं, उसके टेक्निक्स स्टैटिस्टिकल, रूल बेस्ड, डीप लर्निंग। स्टैटिस्टिकल में क्या करते हैं, लाइक ग्राम्स, हिडन मार्को मॉडल्स का यूज करके क्या करते हैं उसको ये मेथड्स वहाँ पे यूज की जाती है। कंडीशनल रैंडम फिल्स भी यूज किया जाता है। रोल बेस्ड मेथड में यूज करते हैं लिंग्विस्टिक रूल मैन्युअली क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। एग्जांपल ग्रामर चेक करते ग्रामेटिकल हमारा सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट डीप लर्निंग मॉडल्स में यूज करते किए जाते आरएनए, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमारे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, एलएसटीएम फॉर सीक्वेंसिंग, then for sequence modeling, transformers for the language understanding and generation में यूज किए जाते हैं। लाइब्रेरीज एंड टूल्स, इसमें कि फॉर नोड जेएस डेवलपर्स में बहुत सारे लैंग्वेज लाइब्रेरीज यूज किए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल में यूज किए जाते हैं जनरल प्रोसेस एनएलपी लाइब्रेरी फॉर द नोड जेएस। कॉम्प्रोमाइज में यूज किए जाते हैं लाइट वेट एनएलपी लाइब्रेरी फॉर सिंपलर टास्क। फैस्ट में यूज किए जाते हैं फॉर द लाइट डिटेक्शन में यूज की जाती है। सेमेंटिक लाइब्रेरी यूज की जाती है और फॉर सेमेंटिक एनालिसिस के लिए पाइथन में पाइथन में यूज की जाती है। एनएलटी के स्पाई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी यूज की जाती है। एनएलटी की यूज की जाती है फॉर द क्लासिकल एनएलपी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। का यूज की जाती है फॉर इंडस्ट्रियल स्ट्रेट एनएलपी विद एफिशिएंट प्री ट्रेनिंग मॉडल्स में यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में यूज किए जाते हैं हगिंग फेस state of the art models like BERT, GPT and Robotics यूज किए जाते हैं। एप्लीकेशन है एनएलपी के जैसे कि चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट। एग्जांपल है हमारे सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। कस्टमर फीडबैक एनालिसिस में यूज करते हैं ऑटोमेटिक सेमेंटिक ट्रैकिंग फ्रॉम रिव्यूज और सर्विस। सर्च इंजन इंप्रूव क्वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्च में यूज किया जाता है। हेल्थ केयर, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस एंड पेशेंट इंटरेक्शन एंड डायग्नोसिस में जो हमारा एनएलपी है वो वहाँ पे यूज किया जाता है। व्हाट इज टेक्स्ट माइनिंग,
टेक्स्ट माइनिंग क्या है? Interpreting results, process, application, numerical text, area, approaches, pros and cons, ये आता है हमारे टेक्स्ट माइनिंग में। लिखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। टेक्स्ट माइनिंग ऑल्सो नोन एज, उसको कहा जाता है टेक्स्ट एनालिसिस, जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पैटर्न्स एंड इनसाइट इंफॉर्मेशन को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एनएलपी, machine learning, data mining to transform the data in unstructured to the structure format that is used for the process. Text mining help in extracting knowledge from vast amount of textual content such as emails, social media posts, research patterns, and customer feedbacks. Next, a key component for text mining for the pre-process text process. Preparing raw text data from analysis. Tokenization, splitting text into words, phrase और sentence. Top removal means जिसमें कि जो हमें क्या करते हैं, कॉमन वर्ड यूज करना है, जैसे कि बेस रूट वर्ड को लिखना है, जैसे कि इज एंड इसको क्या करें, हम रिमूव करने का काम करते हैं। स्ट्रीम लिमिटेशन मीन्स रिड्यूसिंग वर्ड फ्रॉम द रूट वर्ड्स, जैसे कि रन होता है बेस वर्ड, बस रनिंग यूज करते हैं जब हम क्या करें, रनिंग कर रहे। स्टेक नॉर्मलाइजेशन, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू यूनिफॉर्म फॉर्मेट सच एज लोअर केस में यूज कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर डेटा सच एज एंटिटीज, नेम्स, डेट्स, रिलेशनशिप और फेस फैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, कोई भी डेटा में जैसे कि नेम, डेट, ऑब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। Next, text classification. Assigning predefined categories or labels to the text data. Example, classifying emails as spam or not spam. Data को हम binary way में classify करते हैं. Clustering means grouping the data. Semantic analysis means uh, identify the emotion in the sentence, like sentence is positive, negative or neutral. Topic modeling means collecting the documents. और इस टेक्स्ट, हाउ टेक्स्ट माइनिंग वर्क्स, टेक्स्ट माइनिंग कैसे वर्क करे? फर्स्टली कलेक्ट द डेटा, प्रोसेस द डेटा, extract the features, analyze and visualize and reporting. Data collection means gather the data from the various resources like social media, news, reviews, emails or documents, much more. Data processing means uh, the, the the raw text is clean and prepared using and by removing noise like punctuations, irrelevant data and normalizing content. Then feature extraction means extract the features which are useful for the analysis. Example, bag of words, TF, IDF, word in embedding. Example, word to bees, yellow bees. Analyze and interpretation. Algorithms and statistical models are applied to extract patterns, clusters or prediction. Analyze the data for the use. Visualize and reporting means insights are presented using visualization such as word clouds, semantic groups, or clustering maps, in which we can create the reports for the visual reports using graph, chart, maps, etc. Application of text mining. Uh, Text mining used in various applications like social media analysis, customer care services, risk management, fraud detection, बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हमारा एनएलपी। एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से? स्केलेबिलिटी मींस हैंडल लार्ज डेटा सेट दैट इम्पॉसिबल टू एनालाइज मैनुअली। जो डेटा हम मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते उसको टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेशन, स्पीड ऑफ प्रोसेस लाइक समराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। Actionable insight, deliver data-driven recommendation for the decision making like university research production, publication, distribution, access consumption, activities which are create an article, preview, editing, cosmetic analysis, transfer and marketing provided by universities and libraries include sub charges, user search, print and reading cost. टेक्स्ट माइनिंग एंड एनएलपी। टेक्स्ट माइनिंग एंड एनएलपी क्या है? टेक्स्ट माइनिंग एंड एनएलपी
are closely related to each other to work together and also work together to process and analyze large textual data. While text mining focuses on extracting useful information and patterns from the text, while NLP provides tools and techniques to understand and interpret human language. How text mining and NLP work together? Text mining, the process of extracting and structured information, insight or patterns from large set of unstructured text data. It relies on statistical and machine learning methods to analyze the text. While NLP provides the foundation of text mining by NLP by enabling machines to understand the complexities of human language. Human language where you can use where take libraries like NLTK. We are using Python to analyze the human for instance, the text or human language. You know what text like tokenization, a part of fish tagging, name entity recognition, semantic understanding. Key steps combining text mining and NLP. Firstly, we can text process NLP in action. Clean raw text. Clean raw text means remove noisy conjunctions, numbers, and top words. Convert text to lowercase for the uniformity. Tokenization means breaking down text into individual words or phrase. Limitations or streaming means reduce words or to their base or root forms. Feature extraction means converting text into numerical representation of machine learning. First is BOW. First step is bag of words. Simplify text into words frequencies. TF idea term frequency in words documentation frequency means highlight important words in the crops. Word embedding means representing words as a vector to capture semantic meanings. Example word to EV, grow V, etc. Information retrieval and extraction. Using NLP techniques to extract key elements like entities relationship and semantics. Name entity recognition NER. Identify proper nouns like name, location and summarize organization. Relationship extraction. Mapping connection between entities in text. Semantic analysis. Classify text based on tune like positive sentences positive, negative or neutral. Pattern discovery and insight. Apply statistical or machine learning models to analyze structured data. Uh, Clustering classification, top modeling. Clustering means grouping the data, similar type of data. Classification means classify data in different categories like binary classification, yes or no. Topic modeling means discovering hidden themes or topics in our model. Tools and frameworks. There are various types of tools or frameworks used in NLP like tokenization, topic modeling, machine translation, semantic analysis, text classification, name entity recognition, NER, part of pitch, tagging, etc. are used in those tools are used in machine NLP, natural language processing. Next is benefit of combining text mining and NLP. First one is increase documentation and efficiency and accuracy, ability to work automatically, create a summary of text, large and complex textual content, enable personal assistant like Alexa to interrupt spoken words, enable the use of chatbots for customer assistant, performing semantic analysis is simpler, advanced analysis insight that were previously out of reach. Where is text mining used? Text mining used in various industries to analyze the text and extract the information from unstructured textual data. It, its applications are diverse and growing day by day. Thanks to increasing ability of text and advancement in the tool and techniques. In various sectors, it is used like business and marketing, healthcare, education, finance, legal and compliance, social media and online platform, journalism and media. In various ways, text mining in used in various sectors. Tokenization. How is tokenization? Tokenization means it's the fundamental process in step in NLP.
and text mining. It involves breaking down a text into smaller, meaningful units called as the tokens. Those tokens could be words, phrase, sentence, or even individual characters, depending upon on the level of analyze requirement. Why tokenization is important? Tokenization is very important to us for preparation for the analysis. Raw text structure and suitable for the analysis. Tokenization structure it for further processing. Feature extraction. Tokens are basis for the extracting features such as frequency count or embedding. Efficient computation. Reducing text to token simplifies speed up computational tasks. Types of tokenization. First is word tokenization in split text into individual words. Like tokenization जो the जब अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और लाइक we give input tokenization is important to the NLP. Output is we can separate tokenization separate interval code is important in NLP. Sentence tokenization split text into sentence. Tokenize example tokenization split text it is useful for analysis. Tokenization split text it is useful for the analysis. Software tokenization split words into software units useful for handling unknown words or reducing vocabulary size. Example using byte pair encoding. Unbelievable output unbelievable. Character tokenization means split text into individual characters like token T separate, O separate, K separate, E separate, and N is separate, also separate. Various advantages of monkey tokenization. First is transparency and accuracy, increased efficiency, programmer features, factual ownership. Application of tokenization. What are the applications? First is text classification, semantic analysis, machine translation, search engine. Text classification means tokenized data in is used to train classify tasks like spam detection. Semantic analysis analyze individual token or gauge entertainment sentence. Machine learning, machine translation, breaking down sentence into token for translation models. Search engine matching query token with document taken. Next, what is steaming? Steaming is the process of reducing word to its base or root form. The root form called as steam and is not necessarily valid word to the language, but is simplified representation. Steaming is widely used for NLP tasks to group words with similar meaning, understand common representation. For example, word like running, runner, and run may be all reduced to the steam is run. Why use steaming? Dimensionality reduction. Reduce the number of unique tokens in the text, making it easy to analyze. Improve matching. Help match words with similar meaning, improving tasks like search and information retrieval. Simplicity. Provide a quick and computation expensive way to normalize our words. Common streaming algorithms. Porter streamer. One of the most popular streaming algorithms is reduce the words to their stream following set of rules. Example: running, run, flies, fly. Laxer streamer means more aggressive than porter, reducing short distance. Example: running, run, connection, connect. Snowball streamer means a more advanced version of the sports streamer support multiple languages. Application of stream. Streaming are used in real life application like cleaning, banking, shopping. Limitation means it is a process of reducing word to the base root from called lemma while ensuring that the result is valid word in the language like unstreaming. A stream limita- limitization consider the context of word and its part of which to determine the accurate base from. For example, word like running, ran, and run are reduced to the lemma run.
However, better to it reduced to the good because limitization use linguistic rules and dictionaries. Why is limitization for the accuracy? Provide linguistic accurate truth from context and consider the part of speech for better normalization. Improve result. Mathematical for tasks like text analysis, search, and machine learning by analyzing sem, semantical similar words. Streaming versus limitization. Streaming, achieve, achieve, achieve. Limitation is achieve, achieving, achieve. In streaming can reduce words to stream that are not existing words, while in limitization reduce inflected word to their lemma, which is always existing words. Operate in streaming operate on single word without knowledge of the context. Limitization can leverage take context to the finding of correct lemma of the word. Streaming is simpler and faster. Limitization is more accurate, but is slower. Limitization. Limitization, where limitization group together different inflected forms of word called lemma. Uh, some show similar to the streaming as it is map several words into the one common root. Output of limitation is proper word. For example, limiter should be map gone, going, and went into the meaning is the person is go. Applications of limitation. Application of limitations. Uh, limitation. First is search engine. Match user queries with document containing various from forms of words. Text classification means reduce the noise in textual data for better model performance. Machine translation means normalize input text to improve translation accuracy. Semantic analysis means group similar words for consistent semantic evaluation. Chatbot means understanding user intent by reducing word from. Next is stopwords. Stopwords are commonly used for language that are usually filter out during text processing in NLP tasks. Those words typically carry little to non-semantic value to remove a focus or meaningful content of the text. Stopwords means the words which are most appear in the our sentence like articles, pronouns, preposition, conjunction. Article is as and the. Pronouns means he, she, it, they. Preposition is, on, at, for, by. Conjunction and, or, but, so. Though those articles, pronouns, and preposition conjunction are appear in the text in most time. So that's called as stoppers. Why remove stoppers? Reduce noise. Stop words do not add significant value to the text analysis or machine learning tasks. Then second one is improve efficiency. By removing stop words, the dataset size is reduced, leading to faster process. Focus on semantic helps algorithms to concurrent or more meaningful words or features. Challenging with stop words, context dependency. Words can be carry meaning in the specific context. For example, in to be or not to be. Removing to and be change the sense of the sentence. Domain specific requirements. Some field may require returning stop words for accurate analysis. Example linguistic fields. Document term matrix. Document term matrix is a mathematical representation of collection of documents. Means rows represent documents, column represent terms that appear across all the documents. The value of the matrix typically indicate the transparency or presence or absence of each term in each document. A DTM is crucial in the text analysis, enabling text tasks like task classification, topic modeling, and information retrieval. For the crops with a document and M unique words, if the DTM will be have dimensions n into m, the value at position.
IJ represent how often the J term appear in the I documents.